Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we're starting with question number 2, exercise 9.3. So in this question we have complete the table. So आपको एक table given है जिसमें first column में है first expression, then in the second column we have the second expressions and in the third column we have the product. So means हमें यहाँ first expression और second expression का product find करना है. This is the first part in which we have the first expression as A, the second expression as B plus C plus D. तो हमें इन दोनों का product find करना है. Now A is multiplied by B plus C plus D. So इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास A है उसको हमें B से multiply करना है, then C से and then D से, right? So now A into B plus A into C plus A into D. So A into B is AB plus A into C is AC plus A into D is AD. So हमारे पास आ गया AB plus AC plus AD. Fine. So this is the answer of the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में first expression है x plus y minus 5 and second expression है 5xy. So now we have to multiply this by this. So let's write it down. X plus y minus 5 multiplied by 5xy. So now x सबसे पहले 5xy से होगा, फिर y 5xy से होगा, then 5xy से होगा. So सबसे पहले x into 5xy plus y into 5xy minus 5 into 5xy. Okay, so now 5xy into x, 5 as it is and x दो बार हो गया, so 5x square y plus now 5 और x as it is y square because y दो बार हो गया minus 5 5s are 25 x y as it is. So the answer is 5x square y plus 5x y square minus 25 xy. ठीक है? So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है p and the second expression is 6p square minus 7p plus 5. So अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं. P multiplied by 6p square minus 7p plus 5. So P इन तीनों टर्म से होगा. So P into 6p square minus P into 7p plus P into 5. So अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. P into P, यहाँ पे P है, यहाँ पे P स्क्वायर है, दो बार P यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो ये हो गया P क्यूब एंड 6 into 1 6 माइनस P into 7P, दो बार P आ गया मीन्स P स्क्वायर और साथ में हमारे पास है 7 1 7 प्लस P into 5 will be 5P. So the answer will be 6P cube minus 7P square plus 5P. Okay. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. Fourth part में हमारे पास है 4p square q square and second हमारे पास है p square minus q square. So हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है. So 4p square q square multiplied by p square minus q square. अब यहाँ पे दो टर्म्स है मीन्स ये पहले इससे होगा एंड देन इससे होगा. सो 4p square q square into p square minus 4p square q square into q square, राइट? सो अब यहाँ पे इस पूरी टर्म के साथ हमें p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हमारे पास p स्क्वायर ऑलरेडी है, सो दो बार p यहाँ पे है, दो बार यहाँ पे आ गया. सो 2 plus 2 is 4 मीन्स ये हो जाएगा 4p raised to the power 4 and q square. q as it is रहेगा बिकॉज इस वाले में q नहीं है. नाउ
माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर. अब q स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. So 2 plus 2, 4. So this will be 4p square q raised to the power 4. So the answer will be 4p raised to the power 4 q square minus 4p square q raised to the power 4. ठीक है? So this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में हमारे पास first expression है a plus b plus c and the second expression is abc. So हमें इन दोनों का product find करना है. Now a plus b plus c multiplied by a b c. So a पहले abc से होगा, then b abc से होगा and then c abc से होगा. So a multiplied by abc plus b multiplied by abc plus c multiplied by abc. Now a multiplied by abc, तो bc तो as it is रहेगा, a into a हो जाएगा a square. So this will be a square bc plus similarly अब b और b square हो जाएगा, ac as it is रहेगा. So a b square c plus c into abc. So ab as it is, c into c square. So this means ab and c square. So the answer is a square bc plus ab square c plus abc square. Okay. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question.